Good morning students, class 9 chapter number 7 triangles. In the previous video we have done a theorem used in the exercise 7.2. And what is the theorem? The angles opposite to equal sides of an isosceles triangles are equal. अगर किसी भी isosceles triangle में क्योंकि दो साइड ऑब्वियसली इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल. Now we discuss next theorem which is used in exercise 7.2 and it is the converse of previous theorem. What is the statement? The side opposite to equal angles of a triangle are equal. उसमें था कि अगर साइड इक्वल्स हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे. एंड इन दिस थ्योरम इन अ ट्राइंगल इफ एंगल्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो ऑब्वियसली कन्वर्स है. Suppose it is a triangle ABC and in which angle B and angle C both are equal, so their sides are also equal. Again we prove the theorem theoretical, but before this we do a practical to understand the theorem. Again we cut out a triangle ABC in which we can say that angle B and angle C both are equal. But how can we show it? We just take out a reply of angle C. You can see that it is a reply of angle C. Now we just put it at angle B, then it is completely cover the angle B. So it means these two angles are equal. अब ये दो एंगल्स तो इक्वल हैं. अब हमें यह ऑब्जर्व करना है कि साइड AB एंड साइड AC भी इक्वल है या नहीं. Then we use a thread and we measure the side AB. You can see that it is the length of side AB. Now we put the thread along the side AC. And you can see that it completely cover the and along the side AC it is equal to AC. So it means side AB is equal to side AC. So it is the practical जिससे कि हमने प्रूव कर दिया कि अगर किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स आल्सो इक्वल. बट नाउ वी हैव टू प्रूव इट्स थ्योरेटिकल. फर्स्टली वी नोट डाउन गिवन इन ट्रायंगल ABC angle B and angle C both are equal. It is given and we have to prove the side opposite to angle B it's mean AC and the side opposite to angle C it's mean AB. These two sides are equal. Construction बिल्कुल सेम होगी इसमें. लाइक प्रीवियस थ्योरम we draw AD which is bisector of angle A. Cut BC at D. बाइसेक्टर मीन वही सेम कि ये साइड मतलब एंगल ए को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. नाउ वी हैव टू प्रूव AB इक्वल टू AC एंड AB इक्वल टू AC प्रूव करने के लिए फर्स्टली वी हैव टू कॉन्ग्रुएंट दीज टू ट्रायंगल्स एंड आफ्टर दिस वी कैन से दैट AB इक्वल टू AC. In these two triangles we have to find out three parameters. First parameters angle B equal to angle C obviously given. Third parameter AD is common and second parameter AD is common and the third parameter this angle equal to this angle because AD is the bisector of angle A. So what is the criteria which is complete? AAS criteria by which we can say that these two triangles are congruent. So we just start proof. To start proof, firstly we have to prove these two angles are equal. तो हम कह सकते हैं फ्रॉम कंस्ट्रक्शन AD is
bisector of angle A. So angle BAD and angle CAD both are equal. Now firstly we note down naming of the triangle BAD and triangle CAD. In these two triangle first parameter, क्योंकि हमें क्राइटेरिया बनाना है AAS, तो पहले A, तो A मीन इस ट्राइंगल का एंगल B एंड एंगल C इट इज गिवन. सेकंड पैरामीटर्स एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, रीजन जस्ट प्रूव्ड. And the third, yes, obviously AD equal to AD, which is common. So by AAS we can say that triangle BAD is congruent to triangle CAD. These two triangles are congruent, and after congruency very easily we can say that by CPCT AB and AC both are equal. So it is a very simple proof, similarly theorem, previous theorem. I hope the theorem is clear. In the next video we start exercise 7.2. Thank you very much.